Hello everyone, ମୁଁ रंजीत सेकेंड वीक जून 2026 ର नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर को ए वीडियो रे कवर करिवा एमसीक्यू माध्यम रे। फर्स्ट क्वेश्चन, रिनाउंड शूटिंग कोच जसपाल राणा who recently passed away won 3 gold medals at which sports event in 2006? यार करेक्ट आंसर होची दोहा एशियन गेम्स। दोहा एशियन गेम्स मने रखिथिबे केउ स्पोर्ट्स सहित एसोसिएटेड। Recently, Khaniज Bidesh India Limited Kabil secured 5 critical mineral blocks in Argentina for deep exploration of which critical mineral? Your correct answer is lithium. Correct answer is lithium. Recently, on the occasion of the 25th anniversary of the Shanghai Cooperation Organization, where was the international conference titled Central Asia, the core of the SCO, a space of peace and shared development held? यार करेक्ट आंसर होची दुशानबे, ताजिकिस्तान। एससीओ रिलेटेड मीटिंग ए सब मने रखिबे। Recently the Sea of Azov was in the news. It is located it is bordered by which two countries? ये हला सी ऑफ एजोव ए जगह रे यूक्रेन रो बॉर्डर देखि परछंती आ बाकी जहा रहिला ये हला रशिया रो बॉर्डर मने रखिबे। With reference to the Pradhanmantri Surakshit Matritwa Abhiyan PMSMA recently in the news, it was launched in which year? 10 वर्ष पूरा हला। Correct answer was 2016. Recently the central government released the draft Telecommunication, Television, Radio and Associated Service Rules 2026. Which of the following services is covered under its scope? All of the above are correct answer. Direct to home, DTS service order, internet protocol, television, head end in the sky service. Recently, the 125th edition of the French Open concluded. Who won the women's single title at the tournament? Mira Andreeva. Option D. Which state launched a comprehensive 100-day action plan on June 6, 2026 to mitigate human-wildlife conflict through technological intervention and infrastructure expansion? 100-day action plan to mitigate human-wildlife conflict. Answer will be Kerala. Who was reappointed by the central government as the Deputy Governor of Reserve Bank of India for a 2-year term beginning on June 26, 2026? यार करेक्ट आंसर होची स्वामीनाथन जानकीरमन, एस जानकीरमन मने रहला। नेक्स्ट, recently the first Made in India Airbus C295 military transport aircraft successfully completed its maiden test flight from the final assembly line. The FAL for the aircraft is located in which of the following places? India रे तैयारी मेड इन इंडिया प्रोसेस रे यार करेक्ट आंसर होची बड़ोदरा, गुजरात। Recently, India retained number 1 position in the ICC men's ODI team ranking after the annual update. Which country secured the second position in the ranking? एक रे इंडिया रहला, सेकंड रे न्यूजीलैंड अछि। By which year does India aim to increase its seafood exports to $30 billion? यार करेक्ट आंसर होची 2031 मने रहला। एबेरे जदि हमें स्टैंड देखिबा इंडिया रो एक्सपोर्ट सी फूड एक्सपोर्ट जदि देखिबा $8.5 बिलियन अछि। क्लियर? सबुठु बड़ रोल प्ले करिवो आंध्र प्रदेश, एबे भी सबुठु बड़ रोल प्ले करूची आंध्र प्रदेश। क्लियर? Who received the Bearer Brooks Award and the General Douglas MacArthur Military Leadership Writing Award at the US Army Command and General Staff College graduation ceremony in 2026? माने गोटे ट्रेनिंग देला परे गोटे ट्रेनिंग नेला परे जो अवार्ड मिले मेजर प्रभात मिश्रा तांको मिली मेजर प्रभात मिश्रा ए जारे दीटा अवार्ड कथा कुआ जाइछि।
गोटे है बिरेर ब्रुक्स अवार्ड आउ गोटे हूँ जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिटरी लीडरशिप राइटिंग अवार्ड दीटा अवार्ड कथा जगह कहुई क्लियर बिरेर ब्रुक्स आउ गोटे जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिटरी लीडरशिप राइटिंग अवार्ड प्रभात मिश्रा Which declaration was adopted at the 13th BRICS Urbanization Forum recently held in New Delhi? यार करेक्ट आंसर होची अर्बन मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ब्रिक्स प्रेसिडेंसी थीम यार पर्टिकुलर केउ मीटिंग केउ जगह रे हैला ताकु नेकी भी क्वेश्चंस आसी पारे ठीक अछि पुरी रे हेतिला recently the Netra airborne early warning and control system was in the news. Netra is primarily designed to answer will be provide airborne surveillance, early warning, and battle management capabilities. Recently, the H-3 rocket was in the news after a successful launch from the Tanegashima Space Center. The H-3 rocket is a flagship launch vehicle of which of the following countries? The answer will be Japan. Answer will be Japan. Where was the 29th edition of the India-US Army to Army Staff Talks held on June 6, 2026? India-US Army to Army Staff Talks. Answer will be Hawaii. Answer will be Hawaii. Which company signed a MOU with the Tamil Nadu government for an investment of 18,600 crore in data center, electronics and shipbuilding projects? Answer will be L&T. Answer will be L&T. ठीक अछि. Recently, paraquat was in the news after being banned by Telangana. Paraquat is primarily used as a fungicide, insecticide, herbicide, rodenticide. Answer will be herbicide. किंबा ताकू weedicide बोली भी कहा जाए. Which states modernization of command area development and water management (MCAD) initiative was commended by the Union Ministry of Jal Shakti and recommended as a model for other states and union territories? वाटर मैनेजमेंट को नहीं कि तांकर जो इनिशिएटिव अछि दार ना होची MCAD ये कहार छत्तीसगढ़ रो क्लियर व्हाट टोटल फर्टिलिटी रेट was recorded by the Andaman and Nicobar Islands in NFHS 6, making it the lowest in India. यार करेक्ट आंसर होची 9.9. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आकु ने कि मो सेपरेट वीडियो करिछि बट क्वेश्चन किछि भी आसी पारे जेमति के बे आपण माने देखुचंती एमिति भी क्वेश्चन आसी पारे ठीक अछि हाईएस्ट कोठी अछि लोएस्ट कोठी अछि ए सब टिके मार्क करिवे क्लियर टेलीग्राम रे दे देछि ओरिजिनल रिपोर्ट मने रहला नेक्स्ट who was nominated by President Lee Jae-myung as the new Prime Minister of South Korea on June 9, 2026 and is said to become the country's second female Prime Minister upon confirmation. ये होचंदी President, ये होचंदी new Prime Minister. Answer will be Han Seong-suk. गोटे गोटे जगह लिखा जाइथिबो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बट फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन लास्ट 20 इयर्स भितर जदि पूरा सीक्वेंस देखिबा ताले ये होचंती सेकंड प्राइम मिनिस्टर क्लियर फीमेल प्राइम मिनिस्टर Which country received the first commercial consignment of 1.5 metric tons of fresh Amrapali mangoes exported from Jharkhand on June 7, 2026? Answer will be UK. Answer will be UK. Which country won its record third men's under-18 Asia Cup hockey title by defeating Japan in 2026 final? Men category रो under-18 Asia Cup hockey title के जितला आंसर अब इंडिया के जितला आंसर अब इंडिया ठीक अछि तापरे स्पोर्ट्स सरला परे आउ कोन क्वेश्चन आसी पारे के जितला ताकु ने कि तो क्वेश्चन आसिला केउ जारी खेला जोतला जापान हबो यार करेक्ट आंसर ठीक अछि तापरे केतन कुशवाहा
कैप्टेन द चैंपियनशिप विनिंग इंडियन टीम ए जगह कैप्टेन किए थिले तांको ना भी एग्जामिनर पचारि पारे तो मन रखिथिबे केतन कुशवाहा was the captain in which UT was the Guinness World Record for the tallest underwater human stack achieved in May 2026 पिक्चर देखि पाछंती तिरंगा तिरंगा भी सबुठ बड़ तिरंगा अंडर वाटर अंडमान रे करा जितला माने रेकॉर्ड करा जितला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड अंडमान रे करा जितला ना सिमिलरली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रे 73.16 फीट हाइट रो किबा 22.3 मीटर हाइट रो लोक माने स्ट्रक्चर माने एमती जनक ऊपर जणे थिले which state launched the Yogandhra 2026 statewide campaign to promote yoga and healthy living ahead of International Yoga Day? Yogandhra. Answer will be Andhra Pradesh. Clear? Which city is hosting the second Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference inaugurated on June 8, 2026? Second Commonwealth Parliamentary Association meeting. Answer will be Chandigarh. Answer will be Chandigarh. Ke inaugurate kale? Lok Sabha Speaker Om Birla. Which institution unveiled Anchor, the world's first, the most detailed 3D atlas of the human brainstem in June 2026? Question आसी पारे मन रखिथिबे Anchor. ये unveil करछन्ती IIT Madras. IIT Madras. How many countries, including India, were granted access to cloud mythos under Anthropic's project Glasswing initiative as of June 2026? Cloud mythos. तापरे Anthropic रो प्रोजेक्ट जार ना होची Glasswing initiative. ता अंडर रे क्लाउड मैथोस रो एक्सेस इंडिया को मिली एमती सिमिलरली 15टा कंट्री को ओवरऑली मिली क्लियर एथरे साइबर क्राइम को रोकिया पई कम करिया पई ये गोटे एआई मॉडल क्लियर नेक्स्ट which state launched a pilot project in June 2026 to automate neonatal health monitoring using AI powered smartphone video technology? AI powered smartphone video technology neonatal health monitoring तो यार आंसर होचे आंध्र प्रदेश ये जो नियोनाताल रो मीनिंग होची जने माने संगे संगे जन्म होईची तार हाइट वेट हेड सर्कमफरेंस चेस्ट सर्कमफरेंस आर्म मेजरमेंट्स एई सब से आप माध्यम रे जणा पड़िबो ठीक अछि ना नाही क्लियर Which New Zealand cricketer announced his retirement from all formats of international cricket on June 15, 2026? Correct answer होची Kane Williamson, Ross Taylor. Clear? Next. Which state launched the Singapore Special Force on June 9, 2026 to enhance the protection of women and children? ये हमें पूर्व भी पढ़ी सारी छे एबे लॉन्च करा गला यार करेक्ट आंसर होची तमिलनाडु करेक्ट आंसर होची तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर का ना कौन सी जोसेफ विजय क्लियर क्यों जगह रे लॉन्च करा गला चेन्नई रे ठीक अछि The specialized unit is tasked with monitoring and patrolling public places, identifying vulnerable locations, preventing harassment, and increasing police visibility. Which country first liquefied natural gas export project secured a 10-year marine services contract from Adani Ports and Special Economic Zone Limited in June 2026? Answer will be Argentina. कौन है The initiative is significant for strengthening energy cooperation between India and Argentina. ता सहित with plan to support LNG exports of up to 10 million tons annually to India starting in 2027. India import करिवो Argentina export करिवो
In which location was Manipur's first exclusive special court of the National Investigation Agency inaugurated? Manipur first exclusive special court of the National Investigation Agency. Answer haba Thowbal. Answer haba Thowbal. Manipur chief minister kiye? Yamnam Khemchand Singh. In which tiger reserve did the Archaeological Survey of India discover 25 inscription and ancient rock art in June 2026? Answer will be Nalamala. Answer will be Nalamala. Nalamala tiger reserve कोठी अछि आंध्र प्रदेश रे अछि से जगह रे देखिबा को मिली छि 25 inscriptions. Clear? Which location in Uttar Pradesh has been selected for the establishment of the first 250 megawatt solar power project with a battery energy storage system on defense land? Battery energy storage system. 250 megawatt solar power project. ता सहित बेस. Answer haba Sitapur. Answer haba Sitapur, UP. In which city was the new regional meteorological center launched jointly by UP CM and Union Minister Dr. Jitendra Singh? Earth Science Minister of State Jitendra Singh. Answer will be Lucknow. Answer will be Lucknow. Which Indian state exported the first consignment of a GI tagged Tejpur lychee to Dubai with the facilitation of APEDA in June 2026? Tejpur lychee केउ स्टेट सहित एसोसिएटेड ताकु नेकी भी क्वेश्चन आसी पारे मने रखिथिबे आसाम किंबा एमिति क्वेश्चन भी आसी पारे तेजपुर लीची फ्रॉम आसाम कोठी की एक्सपोर्ट हला आपण कहबे दुबई. Which Indian state signed a memorandum of understanding with the United Nations Development Programme in June 2026 to promote climate resilient and sustainable development? UNDP सहित केउ स्टेट गवर्नमेंट MOU साइन करछि हिमाचल प्रदेश टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विभिन्न प्रकार इनिशिएटिव द्वारा. हु लॉन्च द लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय? ये क्वेश्चन आसी जाय पारे. लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय in New Delhi as part of India's Smart Border Initiative. ये लॉन्च कले अमित शाह. आंसर विल बी अमित शाह. कौन है ये? The digital platform is designed to modernize border management by integrating cargo handling, passenger movement, vehicle processing and inter-agency coordination into a single system. एई सब पई जो different प्लाटफॉर्म थिला डिफरेंट वेबसाइट थिला किंबा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थिला इंस्टीट्यूशन थिला से सब को गोटे जगह को होना गला. ठीक अछि. LPMS जोटा कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एम्स टू रिड्यूस पेपर वर्क बाय अराउंड 90%, improve trade efficiency, strengthen security and enable real time information sharing among multiple government agencies. Which company partnered with Meta to develop India's first AI-enabled hyperscale data center in Jamnagar, Gujarat? India's first AI-enabled hyperscale data center Jamnagar, Gujarat रे को जाउची. तो Reliance Industry जगह पार्टनरशिप करूची. Which state unveiled the Science, Technology and Innovation Policy 2026? Science, Technology and Innovation Policy 2026 to promote a research-oriented economy and strengthen emerging technology sectors. Answer will be Uttarakhand. Answer will be Uttarakhand. ठीक अछि. Which state government launched Project Ganga to provide high-speed internet connectivity to rural families and promote digital entrepreneurship? ये बहुत आगुरा में पढ़ी सारी जेतले अनाउंस करा जितला एबे लॉन्च करा गला. आंसर विल बी उत्तर प्रदेश. Project Ganga. In which year is NASA's Artemis 3 mission scheduled to launch as a critical test flight for future lunar exploration? Future lunar exploration ପାଇଁ NASA ର Artemis 3 mission केबे लॉन्च होबाक जाउची 2027 रे. Which port will have the world's second longest breakwater being constructed by Afghan infrastructure under 5,301 crore contract? Answer will be Vadhavan port. Answer will be Vadhavan port. कोठी अछि महाराष्ट्र रे अछि. Vadhavan port महाराष्ट्र रे अछि. Breakwater रो definition जदि हमें देखिबा, a permanent structure constructed at a coastal area to protect against tides, currents
waves and storm surges आपण माने देखिथिबे ये हला समुद्र बड़ बड़ सीमेंट रो ब्लॉक्स पड़ी थाए समुद्र पानी आसिक डायरेक्ट एथरे माड़ भी हुए बुझी होची सेटा को हमें कहि परिबा वर्ल्ड रो सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रेक वाटर तैयारी हबो क्लियर Which state police launched Operation Milap? ऑपरेशन मिलाप द्वारा 1470 मिसिंग पर्सन को ट्रेस करा जाय पड़ला इन ए मंथ आंसर विल बी गुजरात Which country will receive liquefied natural gas from Malaysia's Petronas under the 20-year supply agreement signed with JERA? Malaysia रो LNG 20 वर्ष जाए जापान पाइबो Which state decided to withdraw the two-child restriction for eligibility in government service in June 2026? Very, very important. दीटारू अधिक चाइल्ड जदि थिबे गवर्नमेंट सर्विस पाई परिबो नाही किंबा जदि गवर्नमेंट सर्विस रछ देन बाहरी जीवो एई जिंसटाकू ए रूलटाकू बाहर कर देछि माने विथड्रॉ कर देछि के मध्य प्रदेश क्लियर ठीक अछि नेक्स्ट What is the targeted share of electricity in global final energy demand by 2035 under the proposed 35 into 35 global electrification target? इलेक्ट्रिसिटी इन ग्लोबल फाइनल एनर्जी डिमांड केते रहइबो 2035 को कोटे कुहा जाई 35% ताले वर्तमान केते परसेंट अछि 20% या विषय डिटेल आपण एबे न पढिले भी चलिबो कोन पेना COP 31 एबे हेइनी जेतल हबो ता विषय हमें डिटेल्स देखिबा किंतु ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट हबा को जाउछे को प्रेसिडेंसी ऑफ टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया मन रखिथिबे को प्रेसिडेंसी ऑफ टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया व्हिच स्टेट अच्छा से तो 31 COP 30 वीडियो करछि जो मान देखि नांती देखि नेबे PDF मध्ये अवेलेबल अछि Which state launched the Priyadarshini scheme to provide free bus travel for women from June 15, 2026? The answer of Ayara Kerala. Priyadarshini scheme. Which state is said to receive a proposed investment of 1 lakh crore facilitated by the Indian Chamber of Commerce? West Bengal investment asibo 1 lakh crore ICC द्वारा Indian Chamber of Commerce द्वारा. In which state was the 20 kilowatt FM transmitter inaugurated in Ramgarh to strengthen border communication infrastructure? FM transmitter. Answer of Rajasthan. Which company secured the letter of award from the Syama Prasad Mukherjee Port Authority for the integrated development of a container terminal in Kolkata? कौन पाई? The integrated development of a container terminal. क्यों कंपनी को मिलला त्यार करेक्ट आंसर होची JSW. Which region will gain all weather connectivity with Jammu and Kashmir through the Zojila Tunnel project? Zojila Tunnel project क्यों दीटा प्लेस को कनेक्ट करूची ताको ने भी क्वेश्चन आसी पारे ठीक अछि एग्जैक्ट होची बलताल एंड मीनामार्ग ऑन NH1 ए जो अंडरलाइन करूची आकु मने रखिबे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को कनेक्ट करछि सेटा डिफरेंट बट एक्जेक्टली क्यों लोकेशन दीटा को कनेक्ट करछि सेटा मने रखिबे द टनल स्ट्रेचिंग अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर जोजिला पास जोजिला टनल मने रखिबे क्लियर ठीक अछि ता द्वारा कौन होबो द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ट्रैवल टाइम बिटवीन सोनामार्ग एंड मीनामार्ग फ्रॉम 2 आवर्स टू अबाउट 30 मिनिट्स ए प्लेस गुडिकर ना इंपोर्टेंट रहिबो Which international organization jointly launched the Blue Valley Cluster in Guwahati with the government of Assam in June 2026? The answer will be European Union. विभिन्न प्रकार कोलाबोरेशन रहइबो ट्रेड को नै कि बहुत किछि जेठी लिखा है ऑर्गेनिक फूड्स अगरवुड तबरा आयुष प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंसेस फ्लेवर्स एटसेट्रा The Blue Valley cluster related to Assam government and European Union मन रखिबे
Which Indian standard was released by the BIS in 2026 to provide a framework for managing community seed banks? Seed ଗଛର seed ତା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ certification 20201 2026 ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ to provide a framework for managing community seed banks ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାରାଇଟିର ଯୋଉ seeds ଅଛି indigenous seeds ଅଛି ତାର preservation ପାଇଁ management ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି In which city was the 114th International Labour Conference held on June 9, 2026? International Labour Conference कोडी हेतला Geneva, Switzerland, June 9. What global rank did Jawaharlal Nehru Port Authority achieve in the Container Port Performance Index (CPPI) Container Port Performance Index 2025 रे Jawaharlal Nehru Port Authority 22 पोजिशन रे अछि 22 पोजिशन रे एवं ये जो CPPI रिपोर्ट पब्लिश करा जाउची वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा In which state did the Ministry of New and Renewable Energy host the Global Wind Day 2026 conference? Very important. Global Wind Day 2026 conference Goa June 15 रे ठीक अछि ए गोटे टार्गेट कथा कुआ जाइछि इंडिया रो टार्गेट कोन रिन्यूएबल एनर्जी गेन करिवारे India is currently the world's fourth largest wind power market and has set ambitious target to achieve 100 gigawatt of wind energy capacity by 2030, 155 gigawatt by 2035. Recently, CGL ro main exam ପାଇଁ environment रे current affair रे मु देइछि एई target रो data. What is the name of India's first indigenous digital video AI model launched under the India AI mission in June 2026? India's first indigenous digital video AI model. ता ना होची वारिया ता ना होची वारिया कहा द्वारा डेवलप करा जाइछि अवतार द्वारा डेवलप करा जाइछि एतरा कोन करा जाय परबो टेक्स्ट टू वीडियो इमेज टू वीडियो ए सब जनरेट करा जाय परबो ठीक अछि Who assumed charge as India's High Commissioner to Bangladesh in June 2026? Answer hobo Dinesh Trivedi. India's highest commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi. Which country elevated its bilateral relationship with India to a special global strategic partnership in February 2026? February 2026 रे हितला बर्तमान सही पार्टनरशिप को आहुरी एलिवेट करा जाइछि फ्रांस कौन सेटा एक्जाक्टली स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ठीक अच्छे फेब्रुआरी मासरे फ्रांस प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ओडिशा को सॉरी इंडिया को आस्तिले नेक्स्ट ए फ्रेमवर्क रे कौन अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रे कौन अच्छी से सब बहुत डिटेल है जो किसी दरकार नहीं Which country partnered with India to launch a UPI NPI cross-border peer-to-peer remittance linkage in June 2026? UPI Unified Payment Interface, NPI Nepal National Payment Interface. The cross-border transaction करा जाय परिबो मने रखिबे नेपाल सहित. Which two states signed a tripartite MOU with Government of India on June 11, 2026 for oil and gas exploration along their share border. दीटा स्टेट आसाम एंड नागालैंड मझे जो बॉर्डर एरिया अच्छी से जगह ऑयल एंड गैस रो एक्सप्लोरेशन पाई इंडिया सहित से माने एमओयू साइन करिसंती तो जगह तीनटा एंटिटी हला who was appointed as the chairperson of the expert committee on agro biodiversity reconstituted by the National Biodiversity Authority in June 2026. Answer will be PL Gautam. PL Gautam. In which state did the India Post launch its first drone-based mail and parcel
ट्रांसमिशन सर्विस ऑन जून 12 2026 ड्रोन द्वारा मेल हिमाचल प्रदेश मन रहा नेक्स्ट in which city was the BRICS agriculture ministers meeting held where the Indore declaration was unanimously adopted in June 2026 answer will be Indore mane Madhya Pradesh clear next mane rakhithibe which organization successfully conducted the flight test of the multi-layered ballistic missile defense system and the naval anti-ship missile medium range in June 2026 यार करेक्ट आंसर होची DRDO obviously ठीक अछि जगह दीटा कथा कहै छी flight test of the multi-layered ballistic missile defense system आ गोटे कथा कहै छी naval anti-ship missile medium range missiles who was appointed as the next chief of the army staff आंसर हबो यार लेफ्टिनेंट जनरल धीरज काहाकू सरपास करूछंती उपेंद्र द्विवेदी in which city धीरज set in which city was the foundation stone laid for the new MSME technology center on June 15 2026 केउ सिटी रे फाउंडेशन स्टोन रखा गला न्यू MSME टेक्नोलॉजी सेंटर पई माने MSME केमती डेवलप होबो तार बेटरमेंट पई गया बिहार गया ठीक अछि नेक्स्ट which digital wallet application was the most downloaded worldwide in 2025 सबुठु अधिक डिजिटल वॉलेट एप्लिकेशन कोटा डाउनलोड करा जायछि त आंसर होछि फोन पे नंबर को नेकी क्वेश्चन आसी जिवो कि 440 मिलियन डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड करा जायछि फोन पे रो व्हाट रैंक डिड India achieve in the Global Peace Index 2026 released by Institute for Economics and Peace कहा द्वारा रिलीज करा जाउछि ताकु नेकी भी क्वेश्चन आसे इंडिया रो रैंक केते अछि ताकु नेकी भी क्वेश्चन आसे 127th मने रखिबे केतरा कंट्री रो 163 कंट्री रो टॉप रे के अछि आइसलैंड टॉप रे अछि आइसलैंड एतिकी थिला सेकंड वीक जून 2026 रो मिक्स करंट अफेयर वीडियो टी कंप्लीट देखथरो धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक टू ऑल